ये क्रैश कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा और फिर हिंदी में। I have to admit, I have never seen a website wireframing AI as powerful as this. I'll type a prompt explaining what my company is, choose the number of pages, and now watch what happens when I click on generate. The question is, does it really work? And if it does, how can you learn everything about it all for free? Welcome to Crash Course by the Cutting Edge School. Today we will teach you the basics of Relume AI that can help you create your website in seconds. So click on the subscribe button right now because we're about to teach you how to write the best prompts in Relume, redesign your own websites in seconds, and speed up your company's design processes. Completing your homework from this episode on time will get you a certificate of achievement. There's a lot of exciting things to learn, so without further ado, let's get started. Alright, so I am on the website on relume.io. As soon as you land, you can create your account. I have already signed in, so I will simply click on launch. Let me first showcase the entire dashboard. On the very left, we have our site builder where I can access all of the projects that I've worked on. So you can already see that I've been trying and testing the tool for my own website and for my friends' websites. And then you have your team right here. So I am already on the pro plan, but you can try all of these features on the free plan as well. Then we have our Figma library, basically to connect your Relume sitemaps and wireframes to your Figma file. You basically need to have a Figma kit that you can import, and I will explain how that kit works. But there is a Figma plugin and a Figma kit, and similarly, if you want to connect things to Webflow, they already have created ready-made components. Now, for those of you who have never used Figma or Webflow, don't worry. Let me still explain you how exactly does Relume work. So instead of importing a project for now, I will simply click on new project. So we'll start from scratch. And then the first step of this entire platform is for us to explain Relume, what does our company do and what do we want in this website. So anytime you create a website from scratch, right? Before you enter the designing stage, you need to create a wireframe. And before you create a wireframe, you need to make a list of the number of pages you will have, the basic content and overview of each of these pages. And in product, we usually call this as information architecture, but in the web design community, this is also referred to as a sitemap. Now, sitemap and information architecture both do have a lot of nuances, but the overall outcome of both an information architecture and a sitemap is that you have access to all of the branches starting from the homepage to all the different interactions. So let's assume I want to create a website for our Cutting Edge Academy. So basically Cutting Edge School is for our YouTube students, for our online students, but we are officially expanding to open up an academy as well, which is targeted towards enterprises and corporate teams. So if a team wants to upskill themselves, they can come to Cutting Edge Academy. Now we don't have a website for this, right? So then I'll describe the company saying Cutting Edge Academy is a place where corporates and enterprises can send their marketing, sales, finance, product, and HR teams to learn latest AI and productivity workflows. I want this website to showcase our 2-day and 1-week long boot camps that cover all latest AI tools. I also want a request a call CTA, a page for our team's stories, and a page for case studies as well. And then I can choose the number of pages I want. So let's just say I want 10 to 15 pages, right? This could be a proper project. In my language, I'll probably keep this at English US itself, and let's click on generate sitemap and see what happens. It is crazy. It's almost magical because it has not only created this entire thing in seconds, but it has created a homepage. Basically, this homepage is where you have all of your major sections. Now, let me explain you what has just happened right now. So on the homepage, you will have your navbar. Then you will have your hero header section, your feature section, and these are just headlines and overviews, right? Now, it's not necessary for you to keep these things, right? You can always double click and edit. But this thing right here gives you a first draft.
Now, as I told you, I had asked them to take this navbar and basically link it to an About Us page, our bootcamps page, and our Request a Call page. Now, if I hover over any of these pages, I can simply click on Generate Content. And within seconds, Relume will start creating content in parallel. So these are multiple AI bots working for me. And can you notice how the heading says CTA section, a CTA form section? So these are different categories of sections, right? Now, if I want to include a new section, if I hover between the spaces of these sections, I'll see a plus icon. Once I click on that, on the left side, we have this menu right here, and you can access the same if you click this part. So you have all of these different section options, right? It could be an about page, a contact page, a testimonial page, whatever it may be. And then you can also reorder them. Now the fun part here is that if I have the About Us section, I can either choose from their pre-made section or I can just generate content. So it gives you complete flexibility on whether you want AI to do all of this work for you or whether you want to put it yourself. Now, do you see this thing right here? This is the name of your section. And sometimes you probably want to keep specific sections in a group itself, right? Now, if I go here and right click, you have a bunch of different options. So if you go and click on Ask AI, you can either edit the page prompt and regenerate the same thing, or you can generate a new sitemap altogether. So if I click on new sitemap, I can work on two websites in parallel. So one sitemap is this, one sitemap is this, and oh wow, we have some celebrations going on. And then you can basically do an A/B testing, right? So you can explore and brainstorm across different approaches. And because this is an infinite canvas, there is no limit to the kind of ideas you can have. Now, if I click on this icon right here, let me just delete this. And let's just work on a simple sitemap. If I click on wireframe, this is where the magic starts to happen. Now notice how all of our content is just getting automated, like all of the sitemaps that I had just created. Can you see how crazy this is? Everything is getting generated in parallel, and I have personally never seen a tool that works as effectively as this. And the point here is that for web developers and web designers, first of all, planning the sitemap takes at least 2 to 3 days, and then making all of these components one by one again takes a huge toll on the entire bandwidth and timelines. Now the crazy part here is that you can take this wireframe and then export it to Figma. So I can copy any of these components or take this entire thing, I can copy this entire page and then open up my Figma workspace and paste it right there. And when you're brainstorming, on the top right corner, we have the comment section. So we can probably say add real images here. And then your entire team can sort of brainstorm on this entire project altogether. And if I go here on the share icon, you can either invite more editors to the team, or you can literally have a public view link where other people can just comment. So if I copy this link right here and paste it, anybody would have access to both my sitemap and my wireframe. So if I open an incognito window, right, because that is a true test of how it would look, this is how our URL would look like to an outsider. So if you're a freelancer and if you're working on web design projects, or even if you're working in a company, before you spend a lot of time designing, you can actually just do this and share it with your company. And can you imagine, it has also created the headline content, the wireframes and the components. But I know what you're thinking. If you're a designer, the question is, how do you move this to Figma and how do you even edit that? So let me explain that in just a few minutes. But there's one more feature that I want to show you, which is about picking a pre-existing website and then improving the entire wireframing and the sitemap of it. So to do that, I will click on this icon right here and I will go back to my dashboard. And I have a very dear friend of mine. His name is Ganesh Prasad and he has a website called The Think School. So let's just say I go and search for Think School, and he has a bunch of courses that he publishes on his website. So let me just say Think School Communication Masterclass. And I think this is the page right here. And what I will do is I will copy the URL of this entire page, right? So this is a pretty good design web page, but what if we want to make it even better? What if you want to make your website better? Can we take this web page and improve it using Relume? Turns out you can. So I will simply go here, and instead of creating a new project, I will click on import. Now in import, you can paste any URL you want. So I'll paste this URL and then I will click on import sitemap. Now in less than 60 seconds, Relume is going to scan the entire website
understand the current architecture, the current copy, and then it will lay out the entire sitemap for me so that I can improve on top of it. And it takes around 1 or 2 minutes depending on how big the website is, because right now I can see that it is scanning the entire thingschool.com website. So it has a lot of pages. It's not just this communication masterclass. It is actually going to thingschool.com and making sure that I get the entire holistic view of the entire website. So the wireframe is ready, and this is the entire sitemap of ThinkSchool's website. Now imagine you can do this for yourself and for your competitors very, very easily. So if I go to any of these pages, right, the story of Lijjat Papad, there is no content here, right? But I can click on generate content. I can click on this thing as well. And you'd realize that it is now being able to create all of this headline sections and the entire structure on its own, right? So if I click on currency devaluation, the EdTech crash, it has a blog post header section. So these things already exist on ThinkSchool's website. You have also communication masterclass as well. So let me generate that. So can you see how this is the overview of the current website? Now, what if I go to Wireframe? Wireframe will now generate all of the sitemaps that I have just approved. So if I have created content right here, Relume will instantly create the wireframe in just seconds. So check this out. It has been able to create the entire wireframe, the header component, even the copy. It has somehow understood what Lijjat Papad is about, and it is so smart. Like, can you imagine? Designers take so much time to create this. So the question is, these are all the basics, right? And of course, you have your web view, you have your tablet view, you have mobile view as well. So everything is responsive. So this is again a huge, huge time saver. The question here is, how do you go from this to Figma? Now, before I explain that, you need to make sure that you have both the Figma plugin and the Figma library imported inside your Figma account. If you do not know how to do that, we have already created a proper course on how Figma works and how do you import libraries. I will paste the link in description. How do you get those libraries? If you go to Figma library and click on this icon right here, you'll first need to import your Figma kit. So basically, all components that you're using right now on Relume, you need to push them on Figma, right? And they have to be components so that you can edit them easily. This kit right here connects your Relume library into your component workspace. If that sounds confusing, let me show you how it works. I'll click on open in Figma and I will choose my team right here, and it will open up a new design tab. And on the first page, we have a welcome document. Then we have the entire style guide. So this entire design system has been declared by default. Can you imagine the amount of time and effort it would have taken you to create these things from scratch? Now you're probably wondering that, Ansh, our company's design system is going to be very different from their design system. Now this is where things become very interesting. Let's just say I have a page called sample. Okay, I'll go back here and let me go to my site builder and let me open up the website that I had just created for the Cutting Edge Academy. Let's assume one of the wireframe pages was approved by the stakeholders and now we want to design this. I will take this entire thing and copy this right here. Then I will go to my file and then I need to install the Relume Figma plugin as well. I've already installed it. If you don't have it, then the previous page will link to the exact link. If you don't have the plugin, just go here and click on install plugin. Now, in just a few seconds, whatever we created on Relume is going to get pasted here. So we have the web version and the mobile version pasted. Now, the biggest advantage here is that all of these things that you see, they are actually linked to their component system. So this is a local instance. If I go to the top right corner menu and click on go to the main component, it will lead me to our design system. So if our company has rounded edges and not sharp edges, I will simply make a change here and then maybe change the color as well. Maybe instead of this, we have something like this. So my buttons would get changed across the website. Now, I'm pretty sure designers and developers are probably losing their mind at this point as to how useful this is. Another crazy thing here is that all of these components are in properly defined auto layout. So all of these things are completely responsive. Another crazy thing is that they have already established every single variant and component that you would need. The reason why this is such a big game changer is that they have also declared all the important primitive and the semantic colors that you need to actually scale your website. So on the right side, if I click on local variables,
you would go to primitive section and you'd see that they have properly organized the brand colors, the neutral colors, and the basic semantic system. So if your brand colors are different, you just have to make a change here, and all of those changes will be reflected across the system. So it's a very, very well-defined system with the typography separately made for desktop, mobile, and text. So it's a game changer for beginner designers and developers who often get confused about how do you make the design system, how do you use the variables, how do you make the semantic colors. And if you want to leverage this to its maximum potential, I would recommend you folks to actually check out our free Figma course where we have explained how do you use variables, how do you use styles, what is the goal behind all of these typography things, because a lot of beginners might not understand the importance of variables and color styles. So you can always complete that syllabus for free and then use Relume to create your basic wireframes, because as a company, you can iterate and brainstorm so faster. Now, in practical use cases, your company's brand guidelines will be completely different from this simple guideline. So to change everything in bulk, we have a plugin called Batch Styler. Now, let me show you how that works. Let's assume my company is a very playful company and we don't want such serious fonts, right? So what I can do is I can go here and select all of my type styles in one single shot. And instead of Roboto, I can simply choose something like, say, plus Jakarta, and then click on Update Styles. So in just a second, it ended up updating 48 text styles in just a click. And it is so seamless because now it is being updated across the entire system. So if I go to my website right here, let's just say I go to the sample page right here, can you see how my entire website is now in plus Jakarta? So I think because I'm running too many operations and Loom itself, so I think the recording might get jittery, but I am using it live and I'm telling you, if you use Batch Styler with the Relume library, it is a huge game changer. Now, if you are a web developer and you directly work on Webflow, then what you can do is you can import their Webflow component library. So if you go to layout, you'll have all of the different alignment options. You have all the different element buttons in one single place and you can copy these things one by one. There's a proper structure as to how you need to link your Webflow account with Relume. I will paste the free tutorial in the description. They are also launching a React library which has all of this open source code available. So you can literally design on Relume and copy this code and implement it in your actual React database. So I'm planning to make a proper 2-episode series on how you can make your own design portfolio website using Relume and Figma. Let me know in the comments if you want us to release that portfolio designing course. We will not make this free course unless we get 500 comments on this video. If you want to get a certificate of achievement, then you need to complete these 4 steps. Go to the link in description and create your free account on Relume. Make your first website wireframe. Take a screenshot and share it on LinkedIn with your notes from this cutting edge school crash course. Make sure you tag me and Relume. Copy the URL of your post and then fill up the form given in description. Make sure you fill up the form end to end with your full name, your WhatsApp phone number and your full address, because that is where we will ship the certificate. Terms and conditions are in the description. We will pick winners within 5 days post the release of this video. Make sure you write your feedback or questions in the comment section below. Click on the subscribe button right now so that you can keep learning with us. If you want us to train your company on the latest AI tools and productivity workflows, then send us an email on collab@anshmera.com. We've been consulting and training businesses all around the world. With that being said, I hope that you are taking care of your mind and body. Now I'll go ahead and teach the same course in Hindi. भाई मानना पड़ेगा, मैंने आज तक इतना पावरफुल वेबसाइट जनरेटिंग एआई बिल्कुल नहीं देखा है। मैं एक प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा जो इसको मेरी कंपनी के बारे में बताएगा, फिर मैं नंबर ऑफ पेजेस डिसाइड करूंगा और अब देखना क्या होगा व्हेन आई क्लिक ऑन जनरेट। सवाल ये है कि क्या ये सच में इतना बढ़िया काम करता है, और अगर करता भी है तो आप इसके बारे में सब कुछ फ्री में कैसे सीख सकते हैं। Welcome to Crash Course by the Cutting Edge School.
आज मैं आपको Relume AI के बेसिक सिखाऊंगा, जिसमें आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डाल के अपने वेबसाइट का वायर फ्रेम और साइट मैप बहुत इजीली जनरेट कर सकते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आज मैं आपको Relume में 3 चीजें सिखाऊंगा। इसमें बेस्ट प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखते हैं, अपनी वेबसाइट को सेकंड्स में रीडिजाइन कैसे करते हैं और अपने खुद के कंपनी के डिजाइन प्रोसेसेस को स्पीड अप कैसे करते हैं। इनफैक्ट इस वीडियो के होमवर्क को पूरा कंप्लीट करने पर आपको हमारी तरफ से एक सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट भी मिल सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो अब मैं आ गया हूँ relume.io पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे साइन अप की जगह लॉन्च का ऑप्शन आ रहा है। लॉन्च करते ही मैं Relume के डैशबोर्ड में आ जाऊंगा। अब इस डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड पे मेरे पास है साइट बिल्डर, जहाँ पे हम अपने वायर फ्रेम्स और साइट मैप्स बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पुराने बने हुए प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रखे हुए हैं, क्योंकि मैं 1-2 हफ्ते से इसको ऑलरेडी ट्राई कर रहा हूँ। एंड देन नीचे मेरा टीम का नाम है। मैं ऑलरेडी प्रो प्लान में हूँ, बट अभी जो मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा आप उसको फ्री प्लान में भी यूज़ कर सकते हो। फिर आता है मेरा फिग्मा लाइब्रेरी। बेसिकली अगर आप एक डिज़ाइनर हो जो फिग्मा में ऑलरेडी काम कर रही है, तो आप अपने फिग्मा डिज़ाइंस को Relume के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मतलब जो जो वेबसाइट्स और वायर फ्रेम्स आप Relume पे बनाओगे, उसको आप बहुत इजीली फिग्मा में शिफ्ट कर सकते हो। और देन सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पहले से बने हुए होंगे, सारे स्टाइल्स जो होंगे वो सारे बने हुए होंगे, और आप कोई भी फाइल कॉपी पेस्ट एक दूसरे में कर पाओगे। बट फिग्मा और Relume के कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक फिग्मा का प्लगइन इंस्टॉल करना होता है, और उनकी जो फिग्मा किट है उसको अपने फाइल्स में इंपोर्ट करना होता है। अगर आपने फिग्मा नहीं सीखा है तो कोई इशू नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक फ्री फिग्मा कोर्स डाल दूंगा। हमने ही फिग्मा सिखाया है, बहुत डिटेल में सिखाया है, तो सब कुछ आप बहुत इजीली समझ पाओगे। अब अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो मोस्टली आप वेबफ्लो में या रिएक्ट लाइब्रेरीज में काम करते होंगे, तो वेबफ्लो का भी कनेक्शन Relume के साथ बहुत इजीली हो जाता है। वेबफ्लो का भी एक प्लगइन है, सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे अवेलेबल होता है, आपने बस कॉपी पेस्ट करना होता है। वेबफ्लो और Relume का भी जो कनेक्शन है उसकी भी मैं सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट अभी समझते हैं कि ये Relume है क्या। तो अब टॉप राइट कॉर्नर पे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। एंड सबसे पहला कदम हमें ये उठाना है कि Relume को ये सिखाना है कि हम किस चीज़ पे वेबसाइट बना रहे हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एक वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलप होती ही कैसे है। डिज़ाइन करने से पहले आपको एक वेबसाइट का वायर फ्रेम बनाना होता है, जो कि एक बहुत ही लो एफर्ट यूआई होता है। उसको सोचने में तो बहुत टाइम लगता है, बट इम्प्लीमेंटेशन में आप सिर्फ टेक्स्ट और बॉक्सेस यूज़ करते हो, जिससे ओवरऑल एक स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। अब वायर फ्रेमिंग से भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम आता है, जिसको बोलते हैं साइट मैप बनाना। अब जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी लोग इसको इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। लैंडिंग पेजेस और मार्केटिंग की दुनिया में इसको साइट मैप भी बोलते हैं। साइट मैप और इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में एक्चुअल में नुआंस का फ़र्क होता है, बट मोटा मोटा दोनों का आउटकम एक ही होता है कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि मेरा जो वेबसाइट है उसमें कितने पेजेस है, और हर पेज से एक यूज़र किधर किधर और सब पेजेस में जा सकता है। अब वेबसाइट बनाने से पहले यहाँ पे मेरे को एक प्रॉम्प्ट देना है, तो आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक प्राइमरी साइट मैप का प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। आप एग्जाम्पल से भी यूज कर सकते हो, बट मैं इस केस में अपनी खुद की कंपनी डिस्क्राइब करूंगा। अब मैं काम करता हूँ एट द कटिंग एज स्कूल। तो कटिंग एज स्कूल हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए है, बट इवेंचुअली हम एक इन पर्सन अकेडमी भी खोलने वाले हैं, जिसका नाम होगा कटिंग एज अकेडमी, जो कॉर्पोरेट टीम्स एंड एंटरप्राइज एंड बिजनेस ट्रेनिंग्स में स्पेसिफिकली एआई टूल्स और वर्कफ्लोज में कंपनीज को ट्रेन करेगा। अब मेरे पास कटिंग एज अकेडमी के लिए कोई वेबसाइट नहीं है, तो मैं अब यहाँ पे Relume को ये समझाऊंगा कि मेरी वेबसाइट क्या करती है और मुझे अपने वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कटिंग एज अकेडमी ट्रेन्स एंटरप्राइजेस एंड corporates on AI tools and productivity workflows. I need the following pages. एक मैं डालता हूँ request और कॉल, उसके बाद केस स्टडीज, देन उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, देन सिलेबस भी कर सकते हैं। वी हैव 2-day trainings एंड 1 week बूट कैंप्स एज वेल। जब आप प्रॉम्प्ट डाल दोगे तो उसमें पहले आपको नंबर ऑफ पेजेस सेलेक्ट करना होगा। लेट्स अज्यूम कि ये बहुत ही प्रॉपर वेबसाइट है, तो मैं 5 से 10 पेजेस सेलेक्ट करता हूँ। एंड देन आप अपनी कोई भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, बट इन मोस्ट केसेस आई थिंक इंग्लिश यूएस इज द सेफेस्ट लैंग्वेज। अब जैसे ही मैं जनरेट साइट मैप पे क्लिक करूंगा, इंस्टेंटली ये फटाफट से मेरा एक तो होम पेज बना देगा, और होम पेज में कौन कौन से सेक्शंस होने चाहिए वो क्रिएट कर देगा। और साइड बाय साइड आप पे हेडिंग भी आता है, और हेडिंग के अंदर क्या होगा उसका भी वो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा है।
अब मज़े की बात यह है कि ये जो होम पेज है यहाँ से डायरेक्टली अब यूज़र रिक्वेस्ट कॉल केस स्टडीज इन सब पेज पे जा सकता है। तो अभी अगर मैं जनरेट कंटेंट पे क्लिक करता हूँ तो विद इन सेकेंड्स हर एक पेज में क्या क्या सेक्शंस होंगे और उस सेक्शंस में क्या कंटेंट होगा वो बहुत इजीली रिल्यूम खुद ही जनरेट कर देगा, विच इज़ एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। एंड इतने अच्छे से ही लिखता है कि मैं खुद बहुत इंप्रेस्ड हूँ कि हाउ इज दिस वर्किंग सो इफेक्टिवली। अब ये जो आप एक सेक्शन देख रहे हो ना, हो सकता है आपको ये सेक्शन ना अच्छा लगे, हो सकता है आपको बीच में कोई सेक्शन डालना हो, तो आप इन सेक्शंस को रीऑर्डर कर सकते हो। तो ये एक ओवरव्यू प्लानिंग हो रही होती है, ठीक है। अब बीच में एक प्लस का साइन है, जैसे ही मैं प्लस साइन पे क्लिक करूंगा लेफ्ट पे एक कंप्लीट सेक्शंस का मेन्यू खुल जाएगा जहां पे आपने जो जो चीजें डालनी है आप डाल सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और लेट्स अज्यूम मैं गैलरी पे चलते हैं, कोई हमारे को अगर फोटोज डालनी है, बेसिकली सारी प्लानिंग चल रही है। अभी हम सिर्फ साइट मैप बना रहे हैं, अभी वायर फ्रेमिंग पे हम नहीं आए हैं। तो यहाँ पे मेरा ई कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्ट आ गया, बट ई कॉमर्स तो होगा नहीं, तो मैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। लेट्स से हम गैलरी ही डालते हैं, ठीक है। ये जो आप वायर्स देख रहे हो, ये सारी जो आप लाइनिंग देख रहे हो, बेसिकली कनेक्शंस है। बेसिकली नैव बार से आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। इस चीज को मैं बोलता हूँ एक स्पेसिफिक पेज। अब अगर आप चाहो तो आप इस चीज को पकड़ के यहाँ पे आप समझो कि अगर मुझे एक दो और केस स्टडी बनानी है तो प्लस साइन करके यहाँ पे आप केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, इस तरीके से आप अलग अलग पेजेस क्रिएट कर सकते हो। तो ये पेजेस विद इन सब पेजेस बनते जा रहे हैं। अब मैं चाहूँ तो इसको राइट क्लिक करके चेंज टू पेज ग्रुप भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये पेज नहीं है, मैंने अपनी कैटेगराइजेशन के लिए इन 3 पेजेस को केस स्टडीज के अंदर डाला है। अब मैं जनरेट कंटेंट जनरेट कंटेंट जनरेट कंटेंट इसमें इस तरीके के सेक्शंस क्रिएट कर सकता हूँ। अब सबसे क्रेजी बात यह है कि आप यहाँ पर अगर वायरफ्रेम पे क्लिक करते हो तो जितनी भी प्लानिंग आपने पहले करी थी वो सारी की सारी प्लानिंग, वो सारे के सारे जो आपके साइट मैप्स है, सारा आपका कंटेंट, सारा आपका एफएक्यू, सारी की सारी पॉसिबल चीज़ें जो आप सोच सकते हो वो इंस्टेंटली अवेलेबल है। देखो कितना फास्ट है ये। कैन यू इमेजिन हाउ क्रेजी दिस इज। मतलब इसमें डिजाइनर्स, कॉपीराइटर्स, रिसर्चर्स, कितने लोगों का एफर्ट लगता था, एंड नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग सो क्विकली। अब ये बोलना गलत होगा कि हाँ एज इट इज इसको हम पकड़ेंगे और वेबसाइट बना देंगे, बट आप समझ रहे हो ये फर्स्ट ड्राफ्ट के लिए कितना वैल्यूबल हो सकता है, कितना ज्यादा टाइम बच सकता है आपका अगर आप एक फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में हो। एंड मैं आपको बार बार इस चीज को रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये चीज लोगों को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, ये लोगों का काम बेहतर करने के लिए है। ये लोगों को एक फर्स्ट ड्राफ्ट देने के लिए। अब इसमें एज अ क्रिएटिव इंडिविजुअल, एज अ कोडर, एज अ डिजाइनर, यू हैव टू पुट इन योर ओन ट्विस्ट टू इट। तो अब आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी, बट ये सोचना कि ओ अब हम क्या करें, नहीं, आपको इससे समझना है एंड इसके ऑन टॉप आपको बिल्ड करना है। अब सवाल सबके दिमाग में यही आ रहा होगा कि भाई ये तो रिल्यूम में सारे वायरफ्रेम्स बने हैं, हम तो फिग्मा में डिज़ाइन करते हैं, एंड जिस तरीके से इसने वायरफ्रेमिंग करी है हमारे यहाँ तो फॉन्ट्स भी अलग है, कलर्स भी अलग है, सब कुछ ही अलग है, तो अब उसको हम कैसे इंपोर्ट करें। ये सारे सवाल मैं एक साथ क्लियर करूंगा, बट पहले मैं आपको ज़रा यूआई का एक ओवरऑल इंटरफेस दिखा देता हूँ। बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको डेस्कटॉप वर्जन, टैबलेट वर्जन, मोबाइल वर्जन, सारे के सारे डिज़ाइन एक साथ मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि इसमें आपका कितना टाइम बच सकता है। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक कमेंट सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ एंड आई कैन जस्ट ऐड अ कमेंट। तो यहाँ पे आपको अगर अपनी आप टीम के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो तो यू कैन हैव बोथ एक्टिव कमेंट्स एंड रिजॉल्व कमेंट्स। फिर यहाँ पे एक शेयर का आइकन आता है जहाँ पे आप बाकी एडिटर्स को इनवाइट कर सकते हो, वरना आप एक लिंक कॉपी करके उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो जो आपके स्टेक होल्डर्स है। तो अभी अगर मैं एक इनकॉग्निटो विंडो खोलता हूँ और यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करता हूँ तो जितना भी काम हमने साइट मैप और वायरफ्रेम्स पे किया है वो सारा का सारा यहाँ पर एज अ पब्लिक व्यूइंग लिंक यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि कभी कभी आप एक ही वेबसाइट के दो अलग अलग साइट मैप्स ट्राई करने की कोशिश करते हो। तो व्हाट यू कैन डू इज़, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे मेरे पास एक प्राइमरी साइट मैप और एक प्लस का ऑप्शन है। मैं क्लिक करूँगा जनरेट अ न्यू साइट मैप एंड देन इफ आई गो ऑन ट्राई एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे दो अलग अलग साइट मैप्स पे एक साथ मैं काम कर सकता हूँ। तो आप समझ रहे हैं, आप चाहो तो सेम प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो एंड देन रिल्यूम के साथ बैठ के पूरा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, एक पूरा कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई ये अप्रोच लेना चाहिए, ये अप्रोच लेना चाहिए।
एंड इट्स जस्ट सो सीमलेस। आप किसी भी चीज़ को मूव अराउंड कर सकते हो, किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे कर सकते हो। इट्स एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड एक्सट्रीमली ईजी टू यूज़। अब जब मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो या तो आप इसको फिग्मा में भेज सकते हो या वेफ्लो में भेज सकते हो, बट उससे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस आइकन पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे जाके अपनी फिग्मा लाइब्रेरी के टैब पे क्लिक करके इनकी फिग्मा किट को अपने फाइल्स के अंदर इंपोर्ट कर लो। तो अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड देन जैसे ही मैं फिग्मा किट पे जाऊंगा, ये बेसिकली इन्होंने कम्युनिटी पे अपना फाइल पब्लिश किया हुआ है। अगर आपको फिग्मा नहीं आता है, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है, तो मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा। तो मैं ज़रा फटाफट से इसको अपनी टीम में इंपोर्ट करता हूँ। एक नया फिग्मा फाइल खुलेगा जिसके अंदर इन्हीं की एक रिल्यूम किट अवेलेबल है। अब मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ कि इसका पर्पस ही क्या है, इसका नीड क्यों है। जैसे ये फाइल बना, इस फाइल के अंदर हमारा पूरा का पूरा डिज़ाइन सिस्टम पहले से बना हुआ है। जिस चीज़ में बिगिनर्स को इतना कन्फ्यूजन और इतना हैसल और इतना स्ट्रेस होता था, यहाँ पे आपके सारे टेक्सटाइल्स फॉर डेस्कटॉप, मोबाइल, सारे आपके वेरिएबल्स, सब कुछ पहले से सॉर्टेड है। उन वेरिएबल्स के अंदर भी आपके प्रिमिटिव और सिमेंटिक कलर्स भी पहले से डिक्लेयर्ड है। मतलब कि इन्होंने अज्यूम करा है कि आपके ब्रांड कलर्स ब्लैक या वाइट है, बट यहाँ पे आप अपने ब्रांड कलर्स चेंज कर सकते हो और वो सारे के सारे चेंजेस फिर इवेंचुअली आपके टेक्स्ट, लिंक्स और इन सब पे अप्रूव हो जाएंगे। सो इट्स अ वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम। यहाँ पे इनका एक स्टाइल गाइड है जहाँ पे उन्होंने पूरा डिज़ाइन सिस्टम को ओपनली एक्सप्लोर करके रखा है। एंड लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे एक पेज बनाता हूँ जिसका नाम है सैम्पल, और अब मैं जाता हूँ वापस अपनी फाइल पे जो अभी अभी हमने बनाई थी। तो उस फाइल से अगर मुझे एक पेज पसंद आ गया है तो मैं अब फिग्मा में इसको एडिट करना चाहूँगा अपने डेवलपर्स को देने से पहले। तो लेट्स अज्यूम कि मेरे को ये होम पेज बहुत बढ़िया लगा है और ये अप्रूव भी हो गया है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करूंगा। कॉपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने जाना है कमांड स्लैश पे एंड देन रिल्यूम प्लगइन को इंस्टॉल करना है। अगर आप पे नहीं है तो आप प्लगइन्स एंड विजेट्स पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जैसे ही मैं प्लगइन खोलूंगा इट विल गिव यू एन ऑप्शन टू लॉग इन। मैं लॉग इन ऑलरेडी कर चुका हूं तो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं जाऊंगा पेस्ट पे, इस पे क्लिक करूंगा और प्रेस करूंगा कमांड वी एंड देन जितने भी मैंने फ्रेम्स वहां पे रिल्यूम में बनाए थे वो सारे यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। मेक श्योर कि पेस्टिंग के बीच में आप प्लगइन को क्लोज मत करना, अदरवाइज द पेस्टिंग गेट्स इंटरप्टेड। नाउ द फन पार्ट हियर इज दैट मोबाइल वर्जन एंड वेब वर्जन दोनों यहाँ पे आ गया है। और अब जो सबसे एपिक बात है वो ये है कि ये सारे बटन्स कंपोनेंटाइज्ड है। मतलब अगर मैं किसी भी बटन को अपने ब्रांड के हिसाब से कस्टमाइज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इस बटन पे क्लिक करके डिज़ाइन सिस्टम में आ जाऊँगा, और अगर मेरी कंपनी बॉर्डर एडीआई को बढ़ाती है तो इसको 24 कर दूंगा एंड देन इट विल बी एप्लीकेबल अक्रॉस द इंटायर वेबसाइट। लाइक दिस इज इंसेनली वैल्यूबल। अब आपको दिखाता हूँ एक और बहुत क्रेजी चीज़। अगर आपका स्टाइल गाइड बहुत ही डिफरेंट है, आपके कलर्स भी बहुत डिफरेंट है, राइट, क्योंकि इन्होंने अलग अलग वेरिएबल, सब कुछ स्ट्रक्चर, इन्होंने जो स्केलेटन होता है, जो एक ढांचा होता है, वो ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया है। अगर आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चेंज करनी है तो आपने कमांड स्लैश क्लिक करके बैच स्टाइलर करके एक प्लगइन है वो खोलना है। यहाँ पे आप इन सारे टेक्सटाइल्स को इंस्टेंटली चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हेडिंग्स प्लस जकार्टा में चाहिए तो इन सबको मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे फैमिली में जाके प्लस जकार्टा को टाइप करूंगा इस तरीके से एंड देन अपडेट स्टाइल्स कर दूंगा। इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, इन 1 सेकेंड लिटरली, मेरे यहाँ पे डिज़ाइन सिस्टम में स्टाइल अपडेट हो गया है। अब जब आप सैम्पल पे जाओगे आपको रियलाइज होगा मेरा सारा टेक्स्ट भी फिक्स हो गया है। सो दिस इज़ ह्यूज। मैंने अभी डेस्कटॉप स्टाइल चेंज करे थे इसलिए मोबाइल पे अपडेट नहीं हुआ है, बट आप इमेजिन कर ही सकते हैं अगर आप ऑलरेडी डिज़ाइन सिस्टम्स में और फिग्मा में काम कर रहे हो तो यू ऑलरेडी नो कि ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। अब जैसे मैंने रिल्यूम को फिग्मा से कनेक्ट करा है, सिमिलरली जो लोग वेबफ्लो में काम करते हैं, जो लोग वेब डेवलपर्स हैं, वो वापस डैशबोर्ड में जाके इनकी एक वेबफ्लो लाइब्रेरी है उसको कॉपी कर सकते हैं और आपको ना इनका स्टाइल गाइड क्लोन करना होता है। अब ये जो वेबफ्लो और रिल्यूम का पूरा इंटीग्रेशन है वो कैसे सेटअप करना है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट मोटा मोटा मेरा इस वीडियो में गोल ये था कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि अब जो फ्यूचर आने वाला है वेबसाइट मेकिंग का और वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, अब वो इस लेवल पे आ गया है। तो जो लोग पहले मैन्युअली करते थे, खुद से सब कुछ इमेजिन करते थे, द कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। यहाँ पे रिएक्ट लाइब्रेरी भी है जो अभी बीटा मोड में है, बट बेसिकली सारे सेक्शंस बहुत नीटली कस्टमाइजेशन के रेडी है जिसका आप कोड बहुत इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर आपका भी मेरी तरह ब्रेन एकदम अमेज हो गया है। हम इस पे और वीडियोस बनाना चाहते हैं, बट आई वांट टू फर्स्ट चेक कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो भी या नहीं।
जो वीडियो आपने अभी देखा है दैट इज ऑल अराउंड बेसिक्स, बट हम प्लान कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे एक 2 एपिसोड सीरीज बनाने का, जहां पे मैं आपको रिल्यूम और फिग्मा यूज करके अपना पहला डिजाइन पोर्टफोलियो या वीडियो एडिटिंग पोर्टफोलियो बनाने का एक कोर्स सिखाऊंगा। तो इट वुड बी एन एंड टू एंड प्रोसेस, बट बिफोर दैट आई नीड टू चेक वेदर यू आर इवन इंटरेस्टेड इन दिस। तो अगर आपको रिल्यूम वैल्यूएबल लग रहा है और अगर आपको इसको और गहराई में सीखना है, देन कॉमेंट बिलो विद योर फीडबैक एंड लेट अस नो कि मुझे ये 2 एपिसोड सीरीज चाहिए। वी विल नॉट मेक दैट 2 episode course until unless we get 500 comments on this video. अब इस क्रैश कोर्स के सर्टिफिकेट को जीतने के लिए आपको ये 5 स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आपको रिल्यूम पर अपना एक फ्री अकाउंट बनाना है। देन रिल्यूम के अंदर एक नया प्रोजेक्ट बनाकर अपना पहला वेबसाइट साइट मैप जनरेट करना है। उसी साइट मैप का अपने स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नोट्स को कंपाइल करके लिंक्डइन पर एक पोस्ट डालना है, जहां पे आप मुझे एंड रिल्यूम दोनों को टैग करेंगे। जब ये सब कुछ हो जाए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है, वहां पे अपनी अपनी सारी डिटेल्स डालनी है और प्लीज अपने लिंक्डइन पोस्ट का लिंक पेस्ट करना मत भूलना। सबसे इंपॉर्टेंट, नीचे कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में टाइप करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी एंड ओवरऑल राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी। इस गिव अवे की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी गई है। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना मत भूलना, वरना आगे आने वाली वीडियोस भी मिस हो जाएगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कंपनी को लेटेस्ट एआई टूल्स और प्रोडक्टिविटी वर्कफ्लोस पे ट्रेन करें, तो आप हमारे को ईमेल कर सकते हैं ऑन collab@anshmehra.com। हम दुनिया भर के बिजनेसेस को एआई पर कंसल्ट और ट्रेन कर रहे हैं। इन वीडियोस को हम 2 बार प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमारी बहुत मेहनत लगती है। इसलिए इस वीडियो को मैक्सिमम डिजाइनर्स एंड वेब डेवलपर्स के साथ शेयर करना मत भूलना और नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी करना मत भूलना। विद दैट बीइंग सेड, आई होप दैट यू टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। दिस इज योर दोस्त अंश मेहरा साइनिंग आउट। If you enjoyed this video, then do check out this video of the same series. I am sure that it will help you even more.